हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो में बायोस्फीयर को डिस्कसन करिया। मु पूर्व मध्य +3 फर्स्ट ईयर एनवायरमेंटल स्टडीज अनेक वीडियो डिस्कसन कर सारी। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर आउ व्हाट इज एनवायरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट सब वीडियो बन सारी। जदि आप देखी ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकि देखिपारे। तो ये वीडियो में देखिए बायोस्फीयर नोट को मुझे शेयर कर। तो बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर from Greek word bios which means life and spira which means sphere, also known as the sphere। माने बायोस्फीयर कौन है? गोटे ग्रीक शब्द जोटा कि बायोस और स्पाइरो आसी। बायोस मीन्स लाइफ और स्पाइरो मीन्स स्फीयर माने परिवेश माने चतुर्पार्श्व। इट कैन ऑल्सो बी टर्म इन द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बोले सेटा कौन ना जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। नेक्स्ट टाइम देखिए बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम। Biosphere is the global ecological system integration of all living beings and their relationships, including their interaction with the elements of the lithosphere, cryosphere, hydrosphere, and atmosphere. Next time देखिए biosphere. In biosphere, all living and non-living being existed in their like abiotic components. Abiotic components it consists of all non-living elements which are essential for survival of the organism. It has lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Minerals, nutrients, gases, and waters are their basic requirements of the organic life. Biotic components it includes planets, animal, and human beings to make biotic components of environment। तो आम देखिले जे बायोस्फीयर कौन ना लिविंग और नॉन लिविंग बिंग को नहीं सब मैंने एक्जिस्ट कर बायोस्फीयर जपरिक एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन देखिले, बायोटिक कंपोनेंट कौन देखिले। नेक्स्ट टाइम देखा एनर्जी। तो बायोस्फीयर एनर्जी फ्लो होची। एनर्जी कि इट इज ए विटाल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर व्हिच इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन एंड जनरेशन ऑल बायोलॉजिकल लाइफ एंड अर्थ। नेक्स्ट देखिए एटमॉस्फेयर। तो बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर जाऊँगी। तो एटमॉस्फेयर आम देखा an atmosphere is made of the layers of the gases surrounding a planet or other celestial body. Earth's atmosphere is composed about 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% can other gases. Next time देखिए हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर कौन ना ए हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन ए प्लानेट। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज वन ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लानेट अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। प्लानेट्स हाइड्रोस्फीयर कैन बी लिक्विड वेपर और आइस माने हाइड्रोस्फीयर कौन जल से जल को प्रकार रही लिक्विड फॉर्म रही वेपर फॉर्म रही आइस फॉर्म रही। नेक्स्ट टाइम देखिए लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कौन द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द brittle upper protection of the mantle or the crust, the outmost layer of the earth structure माने लिथोस्फीयर outmost layer of the earth structure। नेक्स्ट टाइम देखिए फूड चेन। तो बायोस्फीयर फूड चेन रही। तो फूड चेन कौन ए फूड चेन इज ए मॉडल दैट शोज हाउ एनर्जी इज पास्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग टू अनदर। माने फूड चेन कौन ना से गोटे मॉडल दैट शोज हाउ एनर्जी कि पास होची इन द फॉर्म ऑफ फूड रु पुणी लिविंग थिंग रु पुणी आउ लिविंग थिंग को। The arrows between the organisms shows the direction of energy flowed. Food chain being with planets. Energy flows because each organism has stored energy in when it is eaten by the next organism, so its energy passed by along। Next time देखिए organisms in food chains are grouped into categories called trophic levels। These levels are divided into producers, consumers, and decomposer। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर आम सब डिस्कसन करिया कौन तो एग्जाम मध्य ये भी इंपोर्टेंट कारण ए 2 मार्क्स कि 3 मार्क्स पारे प्रोडक्शन विषय लेख, प्रोड्यूसर्स विषय लेख कि कंज्यूमर विषय लेख 2 मार्क्स कि डिकम्पोजर विषय लेख। तो आम देखिए फास्ट देखिए प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर कौन ना प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फूड और देमसेल्व्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। दे यूज एनर्जी एंड सिंपल और इनऑर्गेनिक molecules to make organic compounds। Producers are also called a autotrophs माने प्रोड्यूसर जो माने ऑटोट्रॉफ्स भावे माने कॉल्ड। तो ये एमसीक्यू में आसी पारे प्रोड्यूसर को आ कौन कहि पारे ऑटोट्रॉफ्स। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स गोटेला फास्ट है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और केमियो ऑटोट्रॉफ्स। फास्ट देखिए हमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स माने कौन ना फोटो ऑटोट्रॉफ्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड बाय photosynthesis। They include planets, egglet, and certain basic bacteria। नेक्स्ट टाइम देखिए केमियो ऑटोट्रॉफ्स। केमो
Autotrophs use energy from chemical compounds to make food by chemosynthesis. They include some bacteria and also archaea, archaea, archaea are microorganisms that resemble bacteria. Next time देखिबा consumers. तो consumers कौन ना consumers are organisms that depend on other organisms for food. They take in organic molecules by essentially eating other living things. They include all animals and fungi. Consumers are also called heterotrophs. माने आमे देखिथिले जे कोन producers called autotrophs और consumer trophs heterotrophs. Heterotrophs are classified by what they eat. तो आम देखिए हेट्रोट्रॉप्स को किभଳି क्लासिफाई कराଯାଇଛି गोटे कौन हम ना हर्बिवोर्स कार्निवोर्स ओमिनोवर्स तो देखिए हर्बिवोर्स माने कौन ये मध्य 2 मार्क्स आसीपारे हर्निवर्स कौन व्हाट इज हर्बिवोर्स हर्बिवोर्स तो हर्बिवोर्स कंज्यूम प्रोड्यूसर्स सच अज प्लानेट और ellages they are a necessary link between producers and other consumer example include other deer rabbits and mice तो ये सब कौन herbivores रो example next हम देखें carnivores तो carnivores कौन ना carnivores consume animals example include lions polar bears next देखिए hogs frogs salmon and spiders next हम देखिए omnivores कौन ना omnivores consume both plants and animals they include humans bees brown bears ghouls crows and some species of fish next हम देखिए decomposer तो आप पूर्व हम देखिले जे प्रोड्यूसर देखिले कंज्यूमर देखिले बर्तमान देखिए decomposer तो decomposer कौन when a organism die they leave behind energy and matter in that remains decomposer breakdown the remains and other wastes of and release simple inorganic malicious back to the environment decomposer are classified by the types of organic matters they break down तो आपको मध्य कौन जे डिकम्पोजर मध्य क्लासिफाई कराଯାଇଛି कौन कौन तो हम देखिबा स्कैवेंजर्स detritivores saprotrophs तो scavengers माने कौन ना scavengers consume the soft tissues of dead animals examples of scavengers include vultures raccoons and blowfish नेक्स्ट हम देखिए डेट्रिटिवर्स माने कौन डेट्रिटिवर्स कंज्यूम detritivores the dead leaves animal feces and other organic debris that collects on the soil or at the bottom of a body of water on land detritivores include earthworm millipeds and dung beetles in water detritivores include bottom feeders such as sea cucumbers and fish next हम देखिए saprotrophs the saprotrophs are the final in decomposition the saprotrophs कौन final decomposition they feed on any remaining organic matter that is left after other decomposers do their work saprotrophs include fungi bacteria and single celled protozoa fungi are the only organism that can decompose wood तो यही भाव आम सब कौन बायोस्फीयर डिस्कसन सरी आ पूर्व अलरेडी अनेक लंग क्वेश्चन वीडियो बन सारी जदि आप देखना चैनल को देखिपारे आउ नोट्स को शेयर करूँ जहाँद्वारा कि समस्त नोट्स पहुँची पार थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस